Welcome students, 10th standard science, 8th chapter, how do organisms reproduce? So to start with, let's clear the meaning of the word reproduction. Definition बहुत लोगों को मालूम होगा. The production of new organisms from the existing ones of same species. ये word ज़रूरी है बहुत. The production of new organisms from the existing ones of the same species is known as reproduction. And why is that important? Because reproduction is essential for the survival of the species. Yes, survival से ज़्यादा clear word हम बोलेंगे. It is essential for the continuity of life on earth. So फिर से एक बार, reproduction is the production of new organisms from the existing ones of same species is known as reproduction, and it is essential for the survival or continuity of life बोल सकते हैं, right? So it's an integral feature. and अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की. ये आज का टॉपिक नहीं है. टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखते होगे तो पहला पार्ट यही है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज. हम ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, आई गेस थर्ड सेशन. टुडे वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय single organisms. So which are those modes of reproduction? You already have studied it. That is sexual and asexual reproduction, right? अब इसके definition को एक बार पढ़ लेते हैं. What are the meaning? Asexual reproduction, इनके बीच में distinguish भी आता है, याद रखना. So when a single parent is involved, we say asexual. When two parents are involved, it is sexual reproduction. Second point क्या बनेगा? No gamete formation takes place. No gamete formation takes place in asexual reproduction. यहाँ पर second point क्या बनेगा? Gamete formation takes place. दो gametes fuse होते हैं, zygote is formed. So that is how sexual reproduction takes place. Then meiosis का ये point भी हम next part में cover up करेंगे. So in this, no meiosis happens during asexual reproduction. Here it will happen during gamete formation. तो हम वो डिटेल में DNA कॉपिंग के प्रोसेस के वक्त में उसको डिटेल में समझाऊंगा. अभी के लिए आप सिर्फ पहले दो पॉइंट से क्लियर हो जाओ. सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और आज का टॉपिक ही वो है, सारे टाइप्स कवर करने हैं. द फर्स्ट वन इज फिजन, सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन, थर्ड इज रीजनरेशन, फोर्थ इज बडिंग, एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये आज के हम मेथड्स. एंड सिक्स्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन. These are the 6 methods of asexual reproduction and is the first part of the chapter. The second part is sexual reproduction in flowering plants and the third part is sexual reproduction in human beings. तो ये 3 parts हैं. पहले दो एक एक सेशन में हो जाएंगे and third one might take 2 lectures. So let's start with types of asexual reproduction. Go through the methods again. Fission, then budding, regeneration, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. Let's start with fission. Now fission means getting divided into 2 parts. Fission यानी दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाने को हम fission कहते हैं. So just read the meaning. Okay, so fission means getting divided into 2 parts. So most of the unicellular animals prefer this method for reproduction. These organisms reproduce by binary fission. Bi stands for 2. So here the parent cell will get divided into 2 daughter cells, especially when conditions are favorable.
that is adequate amount of food and moisture is available, the mother cell will divide into two daughter cells, and each daughter cell will begin its life like a new individual, right? So the parent generation ceases to exist after binary fission, and amoeba is a very good example of organism which reproduces by binary fission. So ये एक और एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन इन प्रोटोजुआ. अब इसमें एक एग्जाम्पल मुझे कवर करना है, जस्ट अ मिनट. अमीबा का एक एग्जाम्पल आ ही गया, लीशमैनिया. याद रखना, लीशमैनिया इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल विच इज अ प्रोटोजुअन. It is a parasite which causes the disease known as Kala Azar or black fever. So it is caused by this organism which will reproduce by binary fission. Parent cell gets divided into two parts. Next. So 3 examples you can note down. It will be amoeba, then paramecium. It's a unicellular animal, right? Having cilia all over its body, thread-like structures. It also reproduces by method of binary fission. And leishmania. तो ये 3 examples आप याद रख सकते हो for this term. Now, here the parent cell gets divided into 2 parts. But there are few organisms in which the nucleus will get divided into too many parts. So that is multiple fission. When conditions become unfavorable, that is food, moisture, proper temperature are not available, this is the preferred mode of reproduction by unicellular organisms. They develop a thick coating around itself which is called cyst. और ये thick coating का काम क्या है? To prevent them from bad surrounding. And here the nucleus will divide into several nuclei, and each daughter nucleus is surrounded by a membrane. When favorable conditions return, the cyst will dissolve or break down, releasing the daughter nuclei, and they in turn grow into new individuals. तो एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है वो है प्लास्मोडियम का. द अदर वन इज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ जस्ट हैव टू टेल यू अबाउट प्लास्मोडियम. Now what is plasmodium? It is a protozoan, again a microscopic single celled animal which reproduces by this method. About 1000 daughter cells are produced by multiple fission of one plasmodium cell. 1000 daughter cells. And it is a malarial parasite. Plasmodium is a malarial parasite which causes malarial disease in human beings, and it is carried by female anopheles mosquito. तो याद रखना, प्लास्मोडियम एक सिंगल सेल प्रोटोजोन यूनिसेलुलर एनिमल विल रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, और एक ही इसमें प्रोसेस में 1000 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है. सो व्हाट एक्चुअली प्लास्मोडियम डू इज दे एंटर रेड ब्लड सेल्स ऑफ पर्सन एंड अफेक्टेड, कॉजिंग दैट डिजीज. इतना कुछ डिटेल में है ही नहीं, आपको हर एक का डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लिखते जाना है, as you can see in the textbook. So here it is binary fission in leishmania, and here binary fission in amoeba. Diagrams can be asked, so be prepared with that. और ये है multiple fission in plasmodium. So that way we have finished the first asexual reproduction method, that is fission. So fission यानी cells get divided, leading to the creation of new individuals, and many bacteria and protozoa simply reproduce by fission. Now we move to the second, that is fragmentation. अब मैं अगले 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं आप में से किसी को इसके बीच का एक डिस्टिंग्विश पूछूंगा. सो बी रेडी विद दैट. बडिंग इसके बाद कवर करेंगे हम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रैगमेंटेशन. नाउ व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? अब इस एग्जाम्पल इन्होंने डायरेक्टली कवर किया है, सो जस्ट लेट मी कवर इट थ्रू डिफरेंट स्लाइड. In this method,
the body of a simple multicellular organism, in this method, the body of a simple multicellular organism will break up into small pieces on maturation. मतलब ग्रो होने के बाद इनकी बॉडी फ्रैगमेंट्स में यानी पीसेस में डिवाइड हो जाती है एंड ईच फ्रैगमेंट will develop into new individuals. Each fragment will develop into new individuals. That is called fragment. So fragments means pieces. So upon maturation, upon their growth is achieved, they get divided into two parts and those two parts will then develop into new individuals. So fragmentation के लिए आपको examples लिखने हैं Spirogyra and sea anemones. हमने डाइवर्सिटी में लास्ट ईयर देखा था ANEMONES सी एनिमल्स एंड स्पायरोगायरा विल रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. सो दैट्स द एग्जांपल यू कैन नोट डाउन. यहाँ पर स्लाइड से वेट मानो वेट. सो रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन फिलामेंटस algae like structure. Now what is Spirogyra? Spirogyra is a green filamentous algae plant found in ponds, lakes and slow moving water stream. So that's the example which we have done now. And the next one is regeneration. So we have to remember the example of one plant and one animal. So Spirogyra is an example in case of plant. It's a plant, whereas sea anemone are marine animals. So example के लिए note down कर देना. ओके स्पायरोगायरा. स्पेलिंग डायग्राम्स प्रिपेयर करके रखने होंगे आपको. सो ये है फ्रैगमेंटेशन का. जस्ट लेट मी चेक. डायग्राम नहीं दिया उन्होंने यहाँ पर, कोई बात नहीं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजेनरेशन. ध्यान से पढ़ो. सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट अ न्यू इंडिविजुअल from a part. They can regenerate a new individual from a part which has been accidentally cut off. Planaria shows good example of reproduction by regeneration. So if a planaria is cut into several pieces, each piece develops into a new individual. बढ़िया है सुनने में कि कैसा ये प्रोसेस है. रुक जाओ पुरुषोत्तम. So the basic difference between fragmentation and regeneration is what? कि regeneration actually अगर बोले हम, it's not a method of reproduction, or we cannot precisely say that it is one of the method of reproduction, because only if the organism's body gets cut off due to some accident, only in that case each part will grow into a new individual, right? तो ऐसा तो नहीं होगा कि for reproduction an organism will wait for its body to get cut off, कि आओ कोई तो मुझे कट करके जाओ पीसेस में, फिर ही मैं रिप्रोड्यूस होऊंगा. ऐसा नहीं है. तो ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस होने की. लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या था? व्हेन द ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप टू इट्स मैच्योरिटी लेवल, it will itself break into small pieces and then each part will then develop into a new individual. तो हम फ्रैगमेंटेशन को बोल सकते हैं इट्स अ जेन्यून मेथड ऑफ asexual reproduction, बट फॉर रीजनरेशन इट्स नॉट एक्चुअली दैट केस. और यही उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है. यू कैन जस्ट रीड इट आउट हियर दैट however reproduction or regeneration is not the same as reproduction. Why? Since most organisms will not depend on being cut up to be able to reproduce. मतलब कोई कट नहीं करके गया तो गया तो वो ऑर्गेनिज्म फिर खत्म, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी. सो व्हाट? सो दे विल रिप्रोड्यूस बाय सम और द अदर मेथड. जैसे प्लानेरिया की बात करें, प्लानेरियंस दे रिप्रोड्यूस थ्रू sexual reproduction. Majority of the species of planaria they reproduce through sexual reproduction. So regeneration is just an ability. So echinoderms, ध्यान रखना, echinoderms such as sea star, crayfish, many reptiles and amphibians, they have some examples of regeneration. एक और पॉइंट कवर करना था मुझे.
जैसे हमने लिजर्ड में देखा है कि if their tail get cut off they have the ability to regrow that, पर अगर लिजर्ड के पैर काट लिए तो वो ग्रो नहीं होते वापस। तो हम उसको पूरा एग्जैक्ट केस रीजनरेशन का नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो टेल कट हो गई है उधर से कोई न्यू लिजर्ड तैयार नहीं होने वाली है। ओनली 1 or 2 बॉडी पार्ट्स कैन रीजनरेट। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स हैव सम एबिलिटी ऑफ टिश्यू रीजनरेशन, यानी कुछ लिम्ब्स या टेल डिटैच हो गए तो उसको रीग्रो कर सकते हैं। तो हम उसको पूरी तरह से रीजनरेशन में नहीं लाएंगे, लेकिन दे हैव द एबिलिटी ऑफ टिश्यू रीजनरेशन। बट हियर द प्लानेरिया completely can grow into new individuals if their body gets accidentally cut। तो रीजनरेशन को इसलिए एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन की मेथड नहीं बोली जाएगी, बिकॉज ऑर्गेनिज्म वोंट डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, बट फ्रैगमेंटेशन is a genuine asexual reproduction method। So let us start। So now one question to discuss is that why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration। अब इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट थोड़ा शॉर्ट में रहेगा। जस्ट लेट मी रीड इट आउट। रीजनरेशन कैन बी यूज्ड। अब पहले तो ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। सो रीजनरेशन कैन बी यूज्ड only by those organisms which have relatively simple body organization, means they will consist of only few specialized cells, not even tissues। पूरा रीजनरेशन की बात करें तो उनमें कुछ ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड रहेंगे। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस there are very different types of specialized cells। They make up tissues, tissues make up organs, organs make up organ system, and finally they make up an organism। So we have a very high degree of organization that cannot be reproduced from their cut parts by the process of regeneration। For example, dog का लेते हैं, it cannot regenerate from its cut body parts, say tail, because the cells present in the tail cannot produce dog's organs like heart, lungs, stomach। टेल के इसमें जो सेल्स हैं उससे हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिम्स नहीं बन पाएंगे नीडेड फॉर मेकिंग अ कंप्लीट डॉग। सो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आंसर आपको ये पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है कि only with simple body organizations can reproduce through fragmentation or regeneration। Many multicellular organisms are not simply a random collection, they are specialized cells which are located at different body parts and they are placed at definite positions in the body। So in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical। तो ये आंसर नोट्स में कवर करके मिल जाएगा आपको। क्लियर है सबको वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन? क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स, टिश्यूज प्रेजेंट है और कोई एक पर्टिकुलर पार्ट कट करने से उसमें एबिलिटी कैसे रहेगी बाकी के सारे पार्ट्स को रीजनरेट करने की। हेंस दैट्स द आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड which is budding। ध्यान से पढ़ लेना। Now budding is what? In this method, a bud, a small outgrowth happens। A bud-like projection is formed on the body of the organism। The bud then develops into a new individual और एक टाइम के बाद it then separates from the parent and forms an independent individual। Example, hydra, yeast। So yeah, so you can see budding in yeast कैसे होता है। Then yeast का अगर पॉइंट बताने गए तो what is yeast? Yeast is a tiny unicellular non-green plant which is a fungus and it reproduces by budding। So the buds grow and once they are
then when they reach a maturity level, they separate from the parent cell and they form a new yeast cell. So ये जो भी रिप्रोड्यूस होने का काम है ये वाटर में नहीं हो पाएगा, हमको इसे कोई ना कोई ग्लूकोज के सॉल्यूशन में डालना होगा. इन दैट दे रिप्रोड्यूस. Okay, so this is one more method which we have done. Just a minute. तो टेक्स्ट बुक का एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं. व्हाट इज दैट? Organisms such as Hydra, they use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature, they detach from the parent body and become new independent individuals. और ये डायग्राम भी आपको प्रिपेयर करके रखना है विच इज़ आस्क्ड इन एग्जाम. तो बडिंग के एग्जाम्पल्स दो रहेंगे. वन इज हाइड्रा. इट इज़ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल. हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल एंड ईस्ट इज़ अ फंगस. तो हाइड्रा और ईस्ट के एग्जाम्पल से ये पॉइंट भी कवर हो जाता है. तो ये चार जो है दे आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फिजन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन, फोर्थ इज बडिंग. देन नेक्स्ट टू आपको ज़्यादा ध्यान से क्लियर करके रखना होगा. फर्स्ट आई विल कवर स्पोर फॉर्मेशन एंड देन द लास्ट वन. अब सबको पहले ये स्पोर्स के बारे में समझ के लेना होगा. व्हाट आर दीज स्पोर्स पहले क्लियर कर लो एंड देन आई विल टीच यू हाउ दैट reproduction takes place. So in spore formation, the parent plant will produce hundreds of microscopic reproductive units. आप देख सकते हो छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहेंगे स्पोर्स. और ये अंदर एक स्पोर केस के अंदर स्टोर्ड रहते हैं. When the spore case of the plant bursts open, ये स्पोर्स एयर में स्प्रेड हो जाएंगे. सो व्हेन दिस एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक डैम्प वार्म कंडीशंस, दे जर्मिनेट. वहाँ पे वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं एंड देयर दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट. सो मोस्ट ऑफ द फंगाई जो हम यहाँ पे कवर करने वाले वो है राइजोपस और एक है म्यूकर. राइजोपस और म्यूकर, देन बैक्टीरिया, फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने 9th में पढ़े थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट. दे रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेशल स्पोर bearing organs called sporangium, and when spores mature, the sporangium will burst open to release them. मैं एडवांटेजेस पढ़ने वाला हूँ बट आफ्टर सम टाइम. फिर से एक बार पढ़ लो. इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया
सिंगुलर वर्ड इज स्पोरेंजियम। ये पूरे केस को, सर्कुलर स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। So when in this method, structures called sporangia produce tiny cells called spores. And when these spores come in contact with the moist surface, they develop into new individuals. Example, ये सब फंगस के नाम है, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। तो आपको स्पोर्स के बारे में ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज अ ब्रेड मोल्ड फंगस प्लांट हुज साइंटिफिक नेम इज राइजोपस। तो राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। इफ वी कीप अ moist slice of bread for a few days, then the spores of bread mold present in air settle on the moist bread and there they germinate. So the common bread mold plant consists of what? Fine thread-like projections, textbook में diagram दिया होगा, fine thread-like projections called hyphae, here it is. फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड हाइफे, या इनको आप राइजोइड्स भी कह सकते हो। ये सब नहीं है टर्म्स, बट जस्ट रिमेंबर, एंड इट विल हैव अ थिन स्टेम विथ अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, सिंगुलर वर्ड विल बी स्पोरेंजियम, containing hundreds of minute spores, and when the spore case will burst, the spores are dispersed in air, and these spores are asexual reproductive units which can produce more bread mold plants under suitable conditions. So since single cells हैं directly settle होंगे, that's why this method is called as asexual reproduction method. लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एक ये भी है, और the next one is how will an organism be benefited if it reproduces through spores? How will that organism be benefited? तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिया है that the spores are covered by a thick walls that will protect them until they come into contact with another moist surface. तो जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आते, they are protected and covered by thick walls, and when favorable conditions are seen, they can begin to grow. यही पॉइंट इधर भी दिया है। एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पढ़ो। स्पोर्स गिव सर्टेन सर्वाइवल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। स्पोर्स कैन बी disseminated through air or water, means they can travel through any carrier, and this helps an organism to spread its persistence to a wider geographical area. ये एक एडवांटेज है, because they can be carried away through air, water or through any other carrier. They can spread to a wider geographical area, and they can also remain dormant. Dormant यानी rest state for long time till favorable conditions are found. So they are precursors of seeds, मतलब seed की तरह ही वो act करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ के लेना है। सो ये सारा पॉइंट और ये टेक्स्ट बुक का लास्ट पॉइंट हम कंबाइन करके एक बढ़िया आंसर बन सकता है फॉर द क्वेश्चन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये एक टेक्स्ट बुक का रीड कर लो सारा। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन ब्रेड above our hyphae of the bread mold, they are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in reproduction. The blobs are called as sporangia, which contain cells or spores that can eventually develop into a new rhizopus individual. अब ऐसा ही एग्जाम्पल है पेनिसिलियम फंगस का। आपको मालूम होगा कि इट्स यूज्ड इन एंटीबायोटिक ड्रग कॉल्ड पेनिसिलिन। So penicillium fungus, they also grow through spore formation. Now the last method is vegetative propagation. अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं जो आपको सिलेबस के लिए नहीं है, बट आई विल डिस्कस व्हाट ऑल मेथड्स आर एक्चुअली कवर्ड इन दिस टॉपिक। पहले मीनिंग पढ़ लो क्या है।
what do we mean by vegetative propagation? In this method, new plants are produced from the parts of the old plants. फिर से एक बार, in this method, new plants are obtained from the parts of the old plants. तो old plant के roots, stem, leaves किसी का भी यूज किया जा सकता है. और ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको, दलिया, देन रूट्स के जरिए स्वीट पोटैटो, फिर फ्रॉम स्टेम पोटैटो जिंजर, फिर फ्रॉम लीफ, एक प्लांट की लीफ से नया प्लांट ग्रो हो सकता है, इट इज ब्रायोफाइलम. ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है. सो एक बार टेक्स्ट बुक का वो पॉइंट पढ़ लेते, देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. क्या हो रहा है इन ब्रायोफाइलम? बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन. आप देख सकते हो लीफ के ये बाउंड्री पर थोड़े आउट ग्रोथ हो रहा है, बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं. एंड अगर ये लीव्स गिर जाएं, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, ये बर्ड्स की ग्रोथ की वजह से एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है. सो बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स. अगर ये बर्ड्स भी गिर जाते हैं, that also have the ability to grow into a new plant. तो डेफिनेशन वापस देखो क्या है. We can say a new plant is obtained from the part of the old plant. Hence, this is one way of vegetative propagation. अब इसका बहुत जगह पर कमर्शियली भी यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने. एंड वाई इज दैट, ये डिस्कस करना है हमको. एंड दैट इज अ क्वेश्चन. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? तो ये मेथड क्यों प्रैक्टिस की जाती है? आंसर इधर देखो. Plants produced by vegetative propagation, they will produce flowers and fruits earlier. क्योंकि एक सीड से कोई प्लांट ग्रो करो, या उसके कंपैरिजन में किसी के रूट्स, किसी का स्टेम, किसी का लीफ यूज करके अगर आप ग्रो करते हो, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा. सो प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विल प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. नंबर 1. देन सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द propagation of plants which have lost the ability to produce seeds. उनमें सीड्स आते ही नहीं है, रोज, फ्लावर, जैस्मिन, बनाना एक्सेट्रा. सो द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उनके लिए क्या करेंगे फिर? उनका कंटिन्यूएशन रखने के लिए ओल्ड प्लांट के पार्ट्स का यूज करके न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. एंड उन सब मेथड्स को नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कैन बी डन आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग. अब मैं इन डिटेल में इन मेथड्स को बताऊंगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में खाली एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछेंगे. नन ऑफ द मेथड्स इज फॉर योर सिलेबस. आप देख सकते हो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, खाली नाम यूज किया गया है. तो अभी हम एक एक करके मेथड्स देखते जाएंगे. ये पॉइंट पढ़ लो पहले. लीव्स ऑफ, ये सब पॉइंट कवर हो गया था अपना. ओके, जस्ट अ मिनट. नाउ ये इमेज को भी और मैं जूम नहीं कर सकता, सो जस्ट ट्राई टू मैनेज. एक बार ये पढ़ लेते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. राइट. फिजन के एग्जाम्पल्स बाइनरी और मल्टीपल ये सब थे. बडिंग के लिए हाइड्रा ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन के लिए राइजोपस, फ्रैगमेंटेशन के लिए स्पायरोगायरा, रीजनरेशन के लिए हाइड्रा प्लानेरिया,
अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का अगर डिटेल में बात करने गए तो देर आर 2 टाइप्स. नेचुरली भी होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आर्टिफिशियली भी करते हैं. अब नेचुरल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, ये मैं सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और आर्टिफिशियल में देखते हैं स्टेम, ग्रास और रूट्स का कुछ पॉइंट है क्या. तो अब हम पहले देखेंगे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग का मीनिंग क्या है. द नेक्स्ट वन, ऑलरेडी ये सब हो गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स ऑल इन वन. इन शॉर्ट, ये स्लाइड्स में ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिवीजन के लिए लगे तो आप कर सकते हो. एंड हियर आर द मेथड्स. पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर भी समझ जाओगे कि डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. रीड द फर्स्ट वन. व्हाट इज इट? कटिंग. कटिंग में क्या करते हैं? अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट with a knife, and the cutting part having some buds on it is taken and its lower part is buried in the soil. After a few days, the cutting will develop roots and shoot and grow into a new plant. So it's a method of asexual reproduction, and the new plant formed is exactly similar to the parent plant. Examples आप पढ़ सकते हो. Mango, guava, lychee, lemon, rose. So, grapes, sugarcane, banana, cactus, they also can be grown by the means of cutting. Next is layering. आप देख सकते हो layering में क्या कर रहे हैं. In this method, a branch of the plant is pulled towards the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, new roots will develop from the part of the branch which is buried, and then this is cut off. ये branch जो ओरिजिनल प्लांट से जो खींचकर ज़मीन में डाला था, फिर उसको कट किया जाएगा. The part of the branch which has developed roots will now grow into a new plant. Example, rose, jasmine इधर भी आता है. देन ये सब लेयरिंग मेथड्स में आएंगे. अब ध्यान से क्लियर करो ग्राफ्टिंग मेथड क्या है. मान लो दो प्लांट्स है सामने आपके. द वन इज गुड and giving good amount of fruits, good quality of fruits, but this one is not that good, not giving a good quality of fruits. तो क्या करेंगे? This will be cut. जो प्लांट ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स नहीं दे रहा है उसका कट कर दिया जाएगा पूरा पार्ट. एंड द वन विच इज़ गुड एंड गिविंग गुड क्वालिटी फ्रूट्स, उसका ये पार्ट कट करके इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इनको ज्वाइन कराया जाएगा. एंड देन ये प्लांट्स जो फ्रूट्स देगा इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड गुड. फिर से एक बार पढ़ के फिर एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट अ मिनट. इन ग्राफ्टिंग द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विथ अ ग्राफ्टिंग वैक्स. एप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सब इसमें आते हैं. तो फिर से एक बार सुनो. और ये इन्होंने नाम जो दिए वो भी कवर करना ज़रूरी है. अभी एक को नाम स्कियोन दिया, दूसरे को स्टॉक दिया है. तो इनिशियली क्या करने वाले हैं? द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स. तो हम इन दोनों को स्टॉक कहेंगे. देन द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड स्कियोन. The upper part is called without roots is called scion. Scion is upper part of the plant. In carrying out grafting, two plants are chosen which are to be used as scion and stalk. First, the stem is removed from that plant whose scion has got desirable characteristics, जिसके
अच्छे फ्रूट्स क्वालिटी देने की एबिलिटी है, उसका स्कियन कट करेंगे by making a slanting cut, and this gives us the scion and the lower part of the stalk. जो प्लांट के क्वालिटीज अच्छे नहीं है उसके लोअर पार्ट के साथ ये जोड़ दिया जाएगा. The scion is placed over the stalk and the cut surface of scion and stalk are fitted together and bound tightly with a piece of cloth and covered properly with polythene sheets so as to prevent harmful infection by bacteria or fungus, and loss of water नहीं होना चाहिए, and care should be taken to make that they are properly in contact with each other. यानी ये ऐसा लेयर उनका प्रॉपर कॉन्टैक्ट में आना चाहिए. कैम्बियम लेयर बोलते हैं उनको, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. एंड द कट विल सून हील and both these plants grow together and become one plant, and it will produce good amount of flowers and fruit. So this is one more advantage of vegetative propagation. What is that? That the new plants produced by artificial vegetative propagation will be exactly like the parent plant. So we can say any desirable features of the parent plant will be replicated in this new plant. तो अब हम एक बार advantages देख लेंगे, then whatever your doubts will be clear. So why is vegetative propagation practiced? Number 1, वापस यही वाला पॉइंट कि अगर कभी हमको डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो अपर पार्ट कट करो, ये प्लांट का वापस ग्रो हो जाएगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये न्यू प्लांट में भी आ जाएंगे. So the new plant produced by vegetative propagation will be exactly like parent plant, and any desirable features can be replicated in the new one. Then the fruit trees grown from seeds may take many years before they start to bear fruit. But here, by cutting or grafting, the trees can bear fruits much earlier. Then they need less attention because their growth will happen earlier, and many plants can be grown from just one parent plant. Many plants can be grown by just one parent plant, and we can also get seedless plants जिनकी ability नहीं है seeds produce करने की. You can read out here. Single parent is needed. It takes less time. Offsprings are exact clones of their parent. Clones यानी exact copy, and desirable characteristics can be easily incorporated into the plants with artificial vegetative propagation. How come more number of plants can be grown from a single parent? आप देख सकते हो यहाँ से अगर हमने एक ही प्लांट के स्टेम्स कट करते गए जिनमें वैसी एबिलिटी होती है, एक साथ 10 स्टेम ग्राउंड में कट करके डाल दिए, सो एक ही प्लांट से हम 10 प्लांट ग्रो कर सकते हैं. सो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग इज ओवर. टिश्यू कल्चर हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ये सब टॉपिक हम थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं. रिप्रोडक्शन के पीछे क्या बेसिस है, डीएनए कॉपिंग का पूरा मैकेनिज्म आपको रीड करते जाना है सिर्फ. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स. सिक्स मेथड्स हैं. यहाँ पे उन्होंने बडिंग नहीं ऐड किया. Here it is. It is the process of formation of new individual from a single parent without fertilization. They are classified into 6 groups. Fission. Parent cell will split into 2 or more daughter cells. Binary fission की ये प्रोसेस है. मैं ये आपको डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में समझाने वाला हूँ वापस. मल्टीपल फिजन इन अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, मतलब इसमें भी मल्टीपल फिजन हो सकता है.
Budding. A bud develops as an outgrowth at a specific site. When fully mature, detach from the body. Example, Hydra. Yeast. So this is how it happens in yeast. A bud growth ऐसे connected way में long chain भी बन सकती है birds की. They remain attached. Once they reach a maturity level, they detach. Spore formation. ये slide already cover किया था. Regeneration. If cut or broken, a part of the body can develop into a new individual. Fragmentation. On maturation, the body will break up into smaller pieces and each fragment will develop into new individuals. Vegetative propagation हो गया. Cutting planted with node point in the soil, a new plant can grow. Roots को भी कट करके अलग जगह पर प्लेस करके वापस ग्रोथ कराई जा सकती है, वो भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देगा. ये कटिंग में आएगा. ये ग्राफ्टिंग. Joining a part, stem or bud of a living plant to another, causing it to grow as a part of a second plant. It is useful in inducing यानी transferring the special characteristics of one plant to the other. एक अच्छे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा. लेयरिंग.